This was a catch in the question. What you caught. Done, sir. 10 root 3 kg. Okay, so you applied the equation. Okay, what was your kinetic friction? It was like mu 1 by 2. मतलब mu is equals to 1 by 2. हाँ ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो ये m इंटू क्या लिखा है? M into 10. वो G 10 दिया मैंने. No, hold on. So that is a small correction you need to understand. What are the two forces which are in the y-axis acting downward? F sine theta is one, And mg. and mg. So you are pressing ground with two forces. So the ground will give you back the same normal reaction, and therefore the frictional force will be mu k n, not mu mg, because now your normal reaction is also depend. I told you na shuru mein, this is an example of push versus pull. So you can see when you push, the friction has gone up because weight के साथ ये भी add हो गया है. And so your frictional force is not only dependent on mg but also f sine theta. Friction goes up. Therefore, if you push, it becomes harder because the friction on the box increases. So you should be careful. Yes. Silly mistake. You should know that how the normal reaction behaves. ठीक है. आ गया सर. That is correct. Next. थोड़ा इमेज को छोटा कर लोगे? Sure.
ड्राइंग नहीं बन रहा है मुझसे। क्या नहीं बन रहा? ड्राइंग। बोर्ड इज नॉट वर्किंग. एक मिनट सर, You पेन can थोड़ा। use the lines. Yeah, you can just copy the same diagram and label it. जब मैं इसके मुझे कंपोनेंट्स बनाने थे इसके। अच्छा, so just copy ना. Yeah, let me just copy it for you. इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पार्ट को, जो डायग्राम है. Let's, if we copy this diagram, what happens? आप कर दो सर, मुझे नहीं। So let me just copy it back. ये रहा. सर आपने अपने टेस्ट से दिया है? नहीं. 30, 60, 90. बढ़िया क्वेश्चन है. गुड क्वेश्चन. नो सर, ये ऐसे लोड़ा में था, ये मैंने किया है। अच्छा, करा हुआ है. ओके. इट्स इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस ना। करेक्ट. सर क्लासिकल मैकेनिक्स का काफी यूज जैसे सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा है। स्टैटिक्स का बहुत है. स्टैटिक्स का भी, हाँ स्टैटिक्स का, और ये काफी. इक्विलिब्रियम यूज होता है। Coffee. A lot. If you see your, because I have studied only one semester of civil engineering, but most of the knowledge of statics, Lamy, law of parallelogram, and all was utilized in और ये civil इक्विलिब्रियम engineering. ऑफ कंकरेंट फोर्सेस भी लाइक ब्रिज बनाने में भी काम आता है ये। हम्म. आता है.
एक एक बार ओके ठीक ठीक है। है, तो there will be two T's, right? Which will be supporting. Why have you written? अच्छा, दोनों ही है. Only T1 is supporting the weight, not this one. नहीं नहीं, मैंने T2 का भी लिया कंपोनेंट। कहाँ है? ये रहा। एक ही लिखा हुआ है यहाँ, तो ऐड करते नहीं, हैं. इसमें दो दो लिखे हुए हैं। हाँ, बट ऐड ये क्या है इक्वेशन में? T2 का है. T2 ये रहा। का दोनों वेट के बराबर हैं. इन दोनों का सम अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस होगा. You have to write the नहीं upward forces, which are two, one and two. The sum of these two is equal to mg. नहीं नहीं, रुक जाइए एक मिनट। Equilibrium means the sum of upward and downward is equal. Why both of them are equal to mg? नहीं नहीं,
निकाल दिया सर, हो गया। दैट वाज अ बिग ब्लंडर। हो गया। क्या? 4 kg आ रहे हैं। अब यार, आई एम नॉट गोना टेस्ट योर मैथ्स, बट लॉजिक वाइज आई होप यू गॉट इट। हाँ जी। हॉरिजॉन्टल बैलेंस है, ठीक है। सो T1 T2 का रिलेशनशिप निकाल लिया। 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक मिनट। 80 20 4, ओके 4 है। दिस इज 4, ठीक है। हमारा बहुत अच्छा लिखा हुआ आ रहा है। Whereas in my case, I'm not able to write as well as you. अब इस स्टाइलस की तो दिक्कत नहीं है। नहीं यार, इंकी, if I write on लेकिन आई Incado, गेस अपना शायद थोड़ा गलत यूज कर रहे हो। पेन वाले अच्छा, ऑप्शन में जाओ। पेन वाले, ओके हाँ, हाँ, ओके पेन वाले जहाँ पर है, हाँ, वहां पर एक हाइलाइटर आ रहा होगा, एक इरेजर आ रही होगी पेन आ के रहा नीचे। है, आ रहा है। उसके यहाँ से 3 लाइंस बन रही होगी हाँ, डार्क हॉरिजॉन्टल। वाली चुन लो। हाँ जी सर, वो जो एकदम थिक है, एकदम एसएस बना होगा। योर्स इज स्टिल बेटर, हाँ मेरे को पता है वो। मैं लाइट से ही लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो नॉर्मली बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, आई एम जस्ट चेंजिंग माई पेज। पेज एंड ओके, दिस यू विल डू इजीली। अरे ऐसा लोड़ा के अंदर ना, इसका अंदर बस जैसे आपने वैल्यूज दी थी ना टेंशन की, वो उसके अंदर हमें कुछ भी वैल्यूज नहीं दे रखी थी, हमें कुछ प्रूफ करना था ओके, कि अगर पढ़ी कैसे लोड़ा। वो एग्जाम्पल नंबर 36 है। ओके, सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम, ओके, नॉट एग्जैक्ट। ये थोड़ा वो सिमिलर सा नहीं जो पहले वाला था। एंगल बड़ा गंदा दे रखा है। क्या दिया हुआ 20 डिग्री। है? टेबल तो देखना 30, पड़ेगा। तो 30 मान ले इसको। नहीं नहीं,
बड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। Very similar. Now it's a pull instead of a push. ठीक है. अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैं बहुत बड़ा। Is it accelerating? Yes. So resultant force exists. कुछ भी दे रखा, चलो ठीक है। ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन है। So n will be equal to. No, नहीं एक मिनट। I disagree with you. N एम plus डी माइ t. एन N प्लस plus t sin theta is equal to mg. दो अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और t sin 60. See the direction. एन प्लस टी साइन 60 Yeah, they're upward. You have drawn the dot diagram. I think it looks okay. is equals to mg। mg माइनस टी साइन 60। ये अपवर्ड है। Yeah, upward. एन ये फॉर टी भी साइन 60 भी तो अप है, ये भी तो mg होता है। नहीं, यहाँ पे तो दो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg बैलेंस्ड है. द सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड t sin 60 इज इक्वल टू mg. हाँ, सही लिखा है. द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू mg. y axis, perpendicular axis, and normal reaction is equal to this. सही करा. तो t by t into root 3 by 2 सही है. n आ गया. ठीक है. This is your x axis. हमें टेंशन निकालनी है, वो निकालनी है टेंशन।
अरे मैंने 60 कहाँ से बना दिया shit। 20 डिग्री राइट। हाँ सर, टेबल है सब, आई कैन मतलब सर्च। वैल्यूज का। मिल जाएगा। सर एक डेसिमल प्लेस तक होनी cos चाहिए। 20 is 0.34। 0.3 मान रहा हूँ मैं इसको। 0.35 बेटर रहेगा। 0.349 है, 0.35। 0.4 मान ले इसको, राउंड ऑफ वेट, करके। इसने फॉर cos 20 डिग्री, नो कॉस cos 20 का 20 साइन डिग्री 20 कितना सॉरी, है? 0.93, 0.94 सॉरी। 0.94, 1 मान ले इसको। 1 से तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी यार, बिकॉज इट प्रैक्टिकली मीन्स नहीं व्हाट। एक मिनट, कॉस 20 इज 1। यस, cos 20 is 0.94, 0.94, should be close 0.95। to 1, because तो वन cos एक 0 is ऐसा 1। एस्टिमेशन मान सकते हैं नहीं सर? नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। मान सकते हैं, ठीक है मान ले। फिर तो ये 9 मान लेते चलो। मतलब एंगल ही नहीं है फिर तो, मतलब योर टेंशन देन इज एट राइट एंगल्स देन। तो 0.9 मान ले। ठीक है। परसेंट ऑफ तो सिर्फ यू जस्ट पुट दिस n in this equation, mu n, collect all the t's and you're done with.
सर हाँ जी। इसमें लिखा टेंशन इन द रोप इज नाउ इंक्रीज टू 150, मतलब इंक्रीज बाय या इंक्रीज 150 होगी सीधा, 2, increase 2, the new मतलब value. द न्यू वैल्यू Yeah, not by बाय। अच्छा 2. ठीक है, I think you can do this. हाँ जी। Simple है, nothing. I think the main catch is being able to decide whether the normal reaction is push coming, add हो रहा है, subtract हो रहा है. हाँ जी। What's happening to normal reaction? Okay, next. सर Yes. in this question can you let's integrate? When do you integrate? That logic should be clear in your mind. सर When do you देखो integrate? मैंने में इसमें डिस्टेंस पूछा, टोटल डिस्टेंस मूव्ड अप द स्लोप Hmm. एंड इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। For integration, you need a relationship between V and T. या If you have a relationship between V and T, वी हैव which where is it? वी एंड टी। No, you don't have any equation. You don't know what rule does it follow. Is it V is equal to T square, T cube, 2T? ओके What is it? You have no clue. Integration के लिए you need a V is equal to a function, a velocity time graph function. Where is it? ओके द वेरिएशन। You द know क्वेश्चन the कंप्लीट है। complete. It is complete, but you know what is happening at various times. That is clear. Okay, a cyclist is moving that has a constant gradient, which means it's like an inclined plane. He is moving up an inclined plane because the gradient is fixed, so he is going upward. That is for sure. Okay? And the variation of speed with time is shown like this. Okay, so Vt is known to you, and velocity is going down from 6 in a curvilinear fashion. So this is not a straight line. So definitely the deceleration is non-uniform. That is for sure. इट इज लाइक 3 पे गिर रहा है ये। क्या यस 3 है कह सकते हैं. तो लाइक क्या तो हम इसके अंदर एवरेज निकाल Average of what? You need टोटल deceleration. वेलोसिटी। You need deceleration to be able to decide distance. If you can find the area under this curve, that also works for you. So it takes 8 seconds to climb the slope. The slope भाई is कर्व है ना। so this is 8 seconds. वो 8 second here represented. This is 8 seconds. This is so if you calculate the number of boxes and you can approximate them, you can get the answer. What is the size of each box? One small box represents how much distance? One small block like this, No, or smaller, is the smallest. You can say this smallest. also. Yes. 2 meter per second. So this is 1 into 1, right? So every small block represents 1 meter. हाँ जी, 1 meter per second into 1 second. So every small block, which is this, represents 1 any meter. 1 meter. So you can calculate approximately how many blocks are there. And जो incomplete है जैसे ये है, this is half a block. नहीं, actually 1 second represent कर रहे हैं। Velocity into time. Velocity like okay, अच्छा Is what? 1 meter, ठीक है। So Is distance calculate. displacement तो Calculate the total. 1 2 3 4 5 6 7 8 meters। And what about these? हाँ, इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। What about these? सारे ऐड होंगे ना? अच्छा सारे All the area under the curve. 8
plus 8, 16. And this also. This, Yeah, this, इसके बारे में. and some of this, not exactly full. ये वाला भी approximate ही Okay. है. नहीं, ये वाला पूरा है. But I think this is complete. This is complete, and first three are complete. We know, yeah, right? And if you go to the next ones, you can see these. there These is are. ये यहाँ तक complete है, but नहीं, ये भी complete ही है. तो ये तो already ले लिया हमने. We have to move to the next one. इसमें if you notice, ये दोनों जो है approximately एक block है, roughly. These two. ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है. तो 7 और 8 ही बन गया ये भी. ये आधा इसका this थोड़ा is सा not हिस्सा बाहर है. constant ना, ये constant नहीं है पूरा. What is not constant? ये graph velocity time नहीं, it's not a constant acceleration. non-uniform है. Your non-uniform acceleration. Yes. So the Not- boxes which you see are very small and incomplete. You have to decide whether it's a 3/4 of a meter approximately, or we it's can 2/3. it's area under the graph. Yes. कैलकुलेट करने बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. नहीं लगेगा. ऐसे यहाँ तक तो पूरा हो गया. We have done this. That we हाँ. know these are 8 boxes, 8 boxes, 8 boxes. 24 meters is already known. If I go to the fourth one, this is 7th box, but some part is missing, which I am saying comes here. ये जो part बाहर हो गया, it gets included in the 8th block. So 24 plus 7 meters more. If I go to the next layer, 1, 2, 3, और ये भी दोनों मिला के रफली एक ब्लॉक बन जाएंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, So how much is this block? 16, 17. This is roughly 2/3 of a block, 2/3 of a meter, and this is maybe 1/3 of a meter. So ये दोनों मिला के बन गए 1, और इससे पहले 1, 2, 3, 4, so 5 ये हो गया. If I go to the last one, these two are complete. These two you can say are approximately 1 meter. Because remember, the block you're assuming also has sub blocks in it, if you can notice. 1 second has been divided into 5 parts, and velocity also is divided into 5 parts here. So you know the small box also. One small box on the x-axis is 1/10th of a second, and one small box on the y-axis is 1/5 of a second. So if I multiply these two, I can exactly find out even the smallest box. Kitna hai? So I can calculate those small boxes also. I don't need to do an approximation. You should know how to read a graph. That's a crux. Could you decide at a micro level or just a approximation method, which I was trying to do, but you also know the size of a single small block in it. So you have to count all of them. कुछ तो complete नजर आ रहे हैं, जहाँ complete नहीं नजर आ रहे, you can always say कि ये complete नहीं था, this was not complete here. I just drew it, but I can calculate the number of by enlarging. थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ अगर, so I can say these are 1, 2, 3, roughly around 4 boxes. So 0.4 meters again. It represents 0.4 meter, or 4 into whatever is the size of one block. 1/5 into 1/10, 1/50, 1/50th of 1 meter. Because 1 meter is divided into how many boxes, if you notice? One small box is how many boxes are there in it? Calculate. कितने छोटे ब्लॉक हैं उसके अंदर 1 मीटर में, छोटे छोटे फर्दर? काफी सारे हैं. Calculate. It's I think 25. these are 25 blocks. So every small block is 1/25. If I've Okay. calculated 4 blocks somewhere, I will do 4 into 1/25. But actually blocks ये तो छोड़. अब ये देखो ना, यहाँ पे ब्लॉक्स भी आते हो रहे हैं छोटे छोटे 1/25. Then take approximation there. This is half of a block, so I will take 1/50th, not 1/25. Okay. So there is a way you can do this. The same question is there in NCERT also, ठीक है. but it is in class 9th. It's class 9. Reading of a graph पे.
ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये एक्चुअली टाइम टेकन टू फॉल 15 meters। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स हाँ अ जी। फ्री फॉल वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन। वाई इक्वल्स टू GT² क्योंकि। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी। हाँ जी। फेयर इनफ, पकड़ लिया, गुड। नहीं तो लोग इसको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन समझ के दे कीप ऑन। वैसे नेक्स्ट एक्चुअली नेक्स्ट। आपको ये मोशन इन अ प्लेन में ना, इसको प्रोजेक्टाइल में पता नहीं इंक्लूड करा हुआ है। सेम है। हाँ, प्रोजेक्टाइल विदाउट एनी एंगल। फिर अगला क्वेश्चन। ओके, तो स्कूल में शायद इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे शायद, मुझे लग रहा है। बोला पूरी थ्योरी पूछो बस, वी डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग एल्स। क्योंकि स्कूल का एम नहीं है ना आपका कहीं एडमिशन हो, पैसे मिल रहे हैं बिना उसके भी तो काम चल ही रहा है, क्यों करें।
J 1995. Yeah. क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहा है. Which of the following is correct? Then, what inferences can you make out of this? So, this is also velocity, okay? ये वही चीज. 3v, okay? Where vt is the velocity, okay? दिया हुआ है. Or some conditions are given during the motion, which is great. Terminal speed is when the body stops changing its velocity. रुक जाती Okay. है उसकी acceleration या deceleration रुक जाती है. So you can put dv by dt equal to 0 and say what happens. V will come out to be 2. So first is correct. Terminal का मतलब होता है it stops. Accelerating or decelerating fix. ठीक है कम 2 आ जाएगी. Okay. The magnitude of the initial acceleration. Yes. Initial मतलब at t equal to 0 what are the conditions? Equal to 0. But you need to know the initial acceleration मतलब t equal to 0 पे acceleration चाहिए, right? Equals to 0. और ये acceleration ही तो है instantaneous. dv by dt. Equal to 0 means 6 meters per second. Yeah, we can say. Yes, can. Speed varies with time. Vt equals to e This you raised won't to. be able to do because this is class 12th concept of differential equations. You should know how to solve something like this using integration. So Okay. this is beyond you, but we'll talk about this one. Let's talk about the speed is 1 meter. तो थोड़ा मतलब integration इतनी नहीं आती तुम्हें अभी. The speed is 1 meter when the acceleration is half the initial value. Class So 12th में सीखे 11th में नहीं. initial value is 6. 3 हो गई मतलब. You have to find corresponding velocity when acceleration is. तो ये d भी सही है. Can we put the values? So if you put speed is 1 meter per second यहाँ पे डाल दिया. तो आंसर है 6. यस सही है. 6 ये का आधा गलत आ है. जाएगा. ठीक है. ये गलत बढ़िया. है. हाँ मतलब you don't know how to solve this, how to बट integrate सर this. एक कैलकुलस है ना पूरा 12th में सीखे 11th में नहीं. हाँ कह सकते हैं. ठीक है उतना you know that much that you can tackle few basic type of situations. Polynomial वाली जो होती है. क्योंकि 11th का मैथ ज्यादा जरूरी है. सर कैलकुलस के कितने चैप्टर्स है 12th में. बहुत है. भरा पड़ा है. बहुत प्रैक्टिस होती है उसकी. काफी मतलब होते हैं. 12th की फिजिक्स क्या 11th से इजी होती है क्या डिफिकल्ट होती है. सेम ही है. ना कोई खास. अगला अगला क्वेश्चन.
ये मेंस का था, जी 1995। अच्छा, ओके। मोर देन वन इज राइट मतलब। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है मोर देन वन इज राइट। इट इज। बंदा ही घूम जाएगा। इट इज 16t minus 60 square. We have to find the position of the body at t equals to 1 seconds. Okay. 10 meters. ठीक है, Substitute. ठीक है। At what time does the body pass the origin? It means x x equals equal to to 0. 0, yes, ठीक है, आता है। Calculate the average velocity of the body between 2 equals to 0 and Between equals to two, 0. yes। डेरिवेटिव ले लेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस आएगी, एवरेज नहीं आएगी। हाँ मतलब और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस दो जगह पे आएगी, t equal टू to और 0, एक t is equal to 2 पे। 2 सेकेंड्स मतलब यानी कि v एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम सही है, टेकन। ठीक है। x2 minus x1। दो x निकाले ना t और 0 पे। निकल जाएगा। अगला, at any time, now the derivative comes into picture। फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम इक्वल्स टू टी। yes, ओके डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा 16 माइनस 12 टी। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ओह अच्छा। और then substitute, find the two instantaneous मैंने आंसर देखा velocities। भी नहीं, मैंने ओरली पता है। व्हाट इज द वेलोसिटी, अच्छा ठीक है। एट व्हाट टाइम द बॉडी विल बी एट रेस्ट, 0 डीवी बाई डी टी निकाल लेंगे। not नहीं not डीएक्स बाई rest, डी टी, equal to डीएक्स 0। dx by dt should be equal to 0. yes, Find the acceleration of the body at any time t. दो Double क्वेश्चन है इसके derivative अंदर। of x. यू टू फाइंड द टाइम एंड पोजीशन, तो टी भी हाँ जी। निकल जाएगा जो, उस पे एक्स निकाल लेना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। and it would be the double derivative of x upon double derivative। बस डबल डेरिवेटिव ले लो, एक बार लिया फिर हाँ दूसरी बस बार डबल लिया, डेरिवेटिव भाई। ठीक है। सो यूल गेट -12। -12 -12। इसका डेरिवेटिव आ गया ना, हाँ या ठीक है, -12, डन। फर्स्ट टर्म की तैयारी खत्म। प्रैक्टिस कर रहे हैं यार अब तक, कंटिन्यू विद योर थ्योरी क्वेश्चंस, वर्क हार्ड ऑन देम। सर ऐसी एक्चुअली हमेशा। नहीं, वो एक्चुअली 40 मार्क का स्कोरिंग है तो क्यों ना ले। हाँ, ठीक है नंबर, बस कह सकते हैं। तो इस अगर वजह एक से डायग्राम बनाना मैंडेटरी होता है उसके अंदर, हाँ पूरा लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है। क्या लॉ था, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका एग्जाम्पल साइंटिस्ट क्या का नाम भी होता लिख है। देंगे साथ में। हाँ, और एक डायग्राम बनाना मैंडेटरी है, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट टू यू, होप यू विल डू वेल, होपफुली ट्राइंग टू स्कोर फुल मार्क्स दिस टाइम। नहीं, आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इस चैप्टर में वो लॉज ऑफ द मोशन है, हाँ, और जिसमें सबसे ज्यादा कम कॉन्फिडेंट हो वर्क पावर एनर्जी। हाँ, अभी करी है हमने काफ़ी करी थी, क्वाइट थोड़ा गुड। डर लग तो थोड़ा सा वो है, क्या बोले। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखनी है बस, दैट्स ऑल, कंजर्व्ड है। और अब उसका लॉस हो जाएगा अगर कहीं पे डिसिपेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके नहीं तो कंजर्वेशन ही है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। चलो, सी यू टुमारो देन, बाय।